ये मैंने पोस्ट तो कर दिया था, essentially just summarizing the points we discussed last time. और now that we're getting into urbanism and urban planning, this also has been dominated by the modernist worldview, essentially progress, development, growth. And now in this postmodern era, urbanism has been reduced to a display of high-tech wonders, symbols and images projecting the power of global corporate capital's hyper-consumerism. So in the midst of all this really insanity, there was a ray of hope in the process of formulating the master plan for Lahore, in which, to begin with, the first step was to involve the citizens. ये citizens की वजह से फिर इसका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो रुख इख्तियार हुआ, and it seemed to have all of the ingredients that we have been calling for: participatory planning, sustainability, and values, and especially a normative approach to planning, rather than an endless growth forever kind of plan. तो ये एक बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, but even this got stuck. I don't know if it was sabotage by design or things just happened, but it got hit by the court in strange ways. The court then put a stay on the proceedings before the plan was completed and published. So the reason why I mentioned the example of the Lahore Master Plan is that with the best of intentions and the best expertise, you can prepare the best plan possible. In the end, it can be brought to nothing because of the power elites. And that includes the financial power, the administrative, political, military, and unless it conforms to their requirements, you don't have a hope that the sensible approach to planning will be adopted. So where are we now? The most pressing issue in our time is the survival of our humanity and our environment in the midst of a global ecological crisis. This existential threat is the consequence of the pursuit of the modern development paradigm,
that measures progress by economic growth. Urban and regional planning has been and continues to be a strategic tool in this destructive enterprise. So rather than being a tool for planning, getting us out of the mess we are in, it is actually in practice part of the forces that are driving all humanity into this existential end time. So in practice, urban and regional planning and execution is carried out by professionals on behalf of or at the behest of the organized collective, that's the state, at the local, regional, or national level, and inevitably has to submit to the will and aspirations of the power elites. So, despite saner voices calling for the need to decouple development and progress from economic growth, despite voices calling for degrowth, deurbanization, and prosperity without growth, etc., endless economic growth continues to dominate the global and local discourse from the power elites and planning professionals themselves down to the street. So individual professionals and academic institutions can and do deliberate, even advise governments and inform and educate the public on issues and challenges. But no amount of planning by planning professionals alone can succeed in realizing sustainable urban ecology unless it is supported by a sea change in the development narrative. So that's where we have arrived. The theme for these conversations was, of course, development as the driver of so-called progress, and then how do we approach planning? And what we've seen is that no amount of the best professional inputs are not enough. Ultimately, you come up against the wall of the big power structures. And this is precisely what seems to be happening to the Lahore Plan. So, the big question, what can we do? What should we do? What do we do under these circumstances? That's where we finished off the last session. And we finished off by identifying possible directions in which we could make a positive participate or do whatever in practice, not just sit and talk about it. And so you could take the route of judicial action, go to the courts on the basis of human rights being violated, and well, we know the judicial process, it takes a very, very long time, etc. But it's one avenue through which you can do something that may effect change policies. But and even the way that judicial action can bring about some change is that it addresses the public awareness. People become aware that there's a big case going on, what are the arguments being taken. So it becomes actually a channel, a means to raise public awareness on issues. But there are other things, especially now with social media and so on. There are many other avenues available, and we've seen how much a difference it has made
particularly the war on Gaza has shown how it really is a very powerful uh, tool and which has motivated, mobilized university students across the world. So public awareness, and then we could even say, why don't we take a real practical entrepreneur, somebody who is in this business and actually working on the ground. And there are some individual developers. Not all of them are crooks and gangsters. There are some people who have a conscience and they want to do something better. So maybe we can team up, and in the process we learn how things should be done, and we can guide them or help them, and together maybe we can do a real demonstration on a real project. And in fact, some of us, particularly Conservation Society, actually did this at the end of another similar discussion, which we call the Lahore Project, which we looked into all the issues of urbanism. And in the end, we produced a paper outlining principles and strategies that should be adopted. And then, as somebody said, but these are very fine, but what do you do in an existing situation, a real world? How do you apply this? So we actually went into, a couple of students took this as a thesis project, and they went into a small neighborhood and worked in the ways that we'd identified, that you learn, first of all, from the people and to identify the problems and the solutions. So, and a similar exercise we did with the walled city, with the walled city authority. That also was a very fruitful experience, especially for us. We learned so much. So that's, I mean, the idea is that we actually go into a neighborhood and without any preformed ideas, and just find out what are the issues, how do people identify the problems, and also how they define what could be possible ways out of those problems. So since then, a number of other very interesting developments have happened. Amongst them, a friend of mine contacted me and said, "You're saying all the right things, but we must take it beyond this to actual some action." And he was very keen to take it to the institutions, schools, that to raise awareness and bring these issues into the consciousness. And so we met and we talked about what can be done. He suggested something very interesting. He is recently retired from the position of CEO of the Pakistan Poverty Alleviation Program. And he said that he also, I think he said he spoke to the new CEO, and he is also very keen to talk to us. So here is a nationwide network apparently doing very good work to, in accordance with their light, whatever they think is good work, but they mean well, and they're actually active in the field with communities, having different things worked out with them. So the idea was that we meet with this organization, explain our
approach to what needs to be done, and beginning by educating their network of motivators who actually work in the field, to get them to understand the issues as we've been discussing here, and then to see how they can incorporate these ideas into the work which they already are doing. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है. इसी तरह से एक दो और भी suggestions. एक तो पहले some time ago a large developer, we had discussions with them and had explained these ideas, and they were very keen to do a project on these lines. So we can go back to them and maybe restart that dialogue. Maybe it comes. Similarly, a young developer in Lahore who's been following a lot of our discussions also agrees with our point of view, and he says, come see what we're doing and select whatever you want, a street or neighborhood or whatever in the next scheme or the schemes that we're doing, and let's see if we can together do something better. So these are possibilities. And I think there was one other way, in a different way, on another forum, the Center for Development Planning Research. I was on a panel, and again, I expressed some basic principles that we've been discussing here. And they showed a lot of interest. They said, we'd like to find out more about what you're saying. And they were keen to have a whole session of proper in-depth discussion, especially the question of a normative city. What is a normative city? And this idea of a normative city was also seems to have grabbed the interest of another person who has been the head of the urban unit till quite recently. And he also approached me and said, I want to find out about what is this normative city. Can we discuss this further? So it seems there's an interest in individuals, organizations, so that we could actually enter. Now, just a few days ago, the Pakistan Council of Architects and Planners has announced a big competition on green, affordable housing, Punjab. And that's started off, and there's a whole process. And we've discussed this in our office, and we've decided to take part in this, but maybe others could also join the team. It needs a big team. It's a very comprehensive thing. We need architects, planners, economists, social analysis, a lot of these aspects, civil engineering, etc. So here are these possibilities. I was also talking recently to Ali Habib, and possibly your contact with WWF
In fact, just in the next few days, they're scheduled to have uh, a sort of seminar on city whatever. Of course, it is focused slightly different on issues of water and so on, but it could be a possible opening. And they've always been, Ali has been head of WWF for many years, and now the new head is also very friendly and supportive. So maybe we can team up together. Um, yes, the one of the main things, feedbacks that I got from that panel discussion at the Institute for Development Planning Research, a number of people said that we're sort of aware of these issues and we kind of have an idea of what we should do, but the city does not have a voice. So I mean, as individuals, nobody is bothered. But if if the establishment can see that, we've seen this when we've taken a case to the courts, and if it's done by a number of NGOs, prominent, so they have a feeling that this is not just one or two crazy individuals. There's a strong social pressure behind this. So, so that's another possibility, that we work to developing a platform, some kind of a, there's already like the Joint Action Committee for Lahore, which deals with more political kind of issues, but it's a sort of committee, voluntary, different organizations, civil service, civic, whatever, organizations that come together when from issue to issue. So maybe we can, and there are many organizations whom we could team up with. Instead of just being one Hastunist, it could be Hastunist, Conservation Society, WWF, etc., 7 or 8 names, and then together, if we do whatever, a press conference, a release, or whatever you decide to do, it will carry weight. And then we can go right up to demanding to have a meeting, even with the chief minister, and we'll say, what's happening to it's our city. You have to listen to us. So here are these different possibilities. Also, at the end of the last session, a number of us here offered their own private land, etc., to do whatever you want to do experimentally. So for today, then, I thought, let's come out with all these ideas and see what do we want to do. So, yeah. A common platform of NGOs on issues relating to our city, its future, or taking up an actual project in the field, or working with an entrepreneur which is working in this field. Or even going to the LDA and saying we'd like to, let's say, take up one of the neighborhood settlements, informal settlements is what the category is. And that's included in the master plan. So we can say, if you tell us which neighborhood, we can go in and do a demonstration, a model planning, etc.
for such a neighborhood. So there are many things that are possible. So it's up to you. What would you like to do? We can just say, have some tea if they offer us some tea and go home, or decide to do something about it. That's exactly in the same spirit, isn't it? That you don't go in with preconceived ideas. The first thing is that you go to the neighborhood, meet with the people, learn from them what the issues are, and also what they think should be the way out. And then what may be missing, uh, what they cannot do, let's say, complicated engineering or something like that. Or so we can discuss where we can help them, and they can. So yes, Kurangi project is a very good example. Well, they said that we're in the field already and working on essentially the question of poverty alleviation, um, livelihoods, income generating actions, enterprises, whatever at each community level, and they cover the whole country. So it's a very big organization, and it's not just a paper organization. They're actually doing things on the ground. और इसके अंदर एक जो एडेड एलिमेंट एंग्रो वालों ने किया था, उसके अंदर जितने भी वो घर थे वो उन्होंने उन औरतों के नाम किए थे, बन्नों के नाम पे नहीं किए थे. देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट एज वेल. But what eventually ended up happening is all the houses were locked for like 6-7 months. People were not living there because they later realized there were behavioral issues as well. So once you give them a concrete solution, there is still a hindrance, which is the behavior. एक तो ये कि वो औरतों के नाम पे है तो बंदों को पता था, और दूसरा वो बंदे ये कहते थे कि हमें फैक्ट्री में जाके काम करना है, हमें गांव के अंदर काम नहीं करना. या फिर उनका एक जिप्सी माइंडसेट भी होता था कि वो एक जगह पे तो रहते नहीं होते, मूव करते रहते हैं. So what I remember Peeta's did last, this was my experience because we visited a Kanpur and when we met all the people there. So when you say okay, we can come up with solutions, can we ever come up with a perfect solution for any area? No, we can't. But they can. And maybe even they can't on their own. What we, at least what I think we could do, is to bring this awareness to those workers in the field. कि साहब ये मसले पैदा क्यों हुए, ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के पीछे दौड़ लगी है, उसकी वजह से हुए. तो वो अगर नहीं तो फिर गोल क्या होना चाहिए, व्हाट आर वी वर्किंग टुवर्ड्स. एंड इफ यू कुड जस्ट रिड्यूस इट टू, लंबी चौड़ी आप बहस ना करें, पर ये समझाना पड़ेगा कि ये क्यों हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक काम करें जो कि लाहौर मास्टर प्लान के अंदर मौजूद है कि इकोनॉमी based on organic farming and artisanal manufacture. तो जो भी आप करें, चाहे घर बनाएं, चाहे अचार बनाएं, जो भी करें, let it not be based on industrial products and based on your own resources and essentially for your own needs. तो अगर इस तरह की कुछ सिंपल बेसिक प्रिंसिपल एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, तो अगर उनकी वो फिर जो भी कर रहे हैं उसके अंदर ये सूझबूझ जो है, दिस वे ऑफ सीइंग थिंग्स, उसको अगर वो उसमें शामिल करें तो जस्ट स्लाइटली यू नो गिविंग इट स्लाइट डिफरेंस. मतलब आपने अगर दस्तकारी चीजें बनानी है तो टूरिज्म के लिए नहीं बनानी, आपने अपने पहनने के लिए बनाना है, जूते अपने पहनने के लिए बनाए. तो वो एग्जांपल दे रही थी कि मोची, अब हमें गांव में मोची नहीं मिलते,
बिकॉज मोची शायद पिछली जनरेशन तक तो काम करता था, लेकिन जब अब उसका बच्चा आए तो वो उसने जूते का काम नहीं सीखा, उसने एजुकेशन हासिल करके उसने भी बाबूगढ़ी नौकरी ढूंढी, उसने कहा मोची से मैं शायद पैसे हाँ, नहीं कमा सकता। तो वही है ना कि अभी तक जो ड्राइविंग पैराडाइम है ना, वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्रेस ही है। तो चाहे पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम हो, अच्छे से अच्छे वेल मीनिंग, बुनियादी तौर पे वो समझते हैं जी उसका हल ये है कि और पैसे कमाओ। एग्जैक्टली। तो अब ये समझाना कि why this is not the solution but that's the problem. दिस इज दी मोस्ट डिफिकल्ट It थिंग is, आई yeah, रियलाइज कि आप yeah. उनको घर भी बना के दे देंगे, उनके दिमाग में ये चीज बिठाना कि वैल्यू बेस्ड थिंकिंग का क्या फायदा है, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट। और घर भी बना के देना नहीं हमने, इन्होंने तो दिया ना, एंग्रो नहीं तो फाउंडेशन ने वो तो बना वो के मैं कह दिया। रहा हूँ, that's not what we are saying. Self reliance, local resources, local consumers, local community के लिए, not for export, not for tourists, not for earning money, but just to be लोकल सस्टेनेबिलिटी मॉडल। self-sustaining, या self-reliance. And if you do that, you are sabotaging the corporate capital. but the corporate capital has sabotaged that will, because as part of my job I've gone to all the rural villages of Punjab and I've realized जहां जहां डोनर पहुंचा है किसी भी तरीके का, उसने इनकी विल खत्म कर दी है अपने मसले सही करने की। Now the people in most of the villages think if some donor can come and do this, हाँ, why should we do बिल्कुल that? बिल्कुल। And I think that is something that we've lost. That is the जी, asset. तो बस यही मतलब है कि ये जो यू नो इट्स कॉन्शियसनेस, I think एक कम्युनिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हुई है इसकी हर वजह चीज, से। हम सारे मसले यही हो रहे। तो अगर उन्हें अवेयर कर दें कि जी ये हो रहा है हमारे साथ, हम कर रहे हैं खुद, और इसमें से इसको रेजिस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद वो खुद ढूंढ लेंगे, ऐसे ऐसे तरीके निकाल लेंगे जो हम आप कभी सोच नहीं सकते। बेसिक प्रिंसिपल उनको अगर दे दिया जाए मेरे ख्याल से, तो उसके बट लिए तो फिर आपको उनका एजुकेशन मॉडल के ऊपर पहले टच करना पड़ेगा। हाँ, the idea is really to begin by educating within, I mean, we would need to be educated as much as we can educate, but are seeing the world in a different perspective of, अगर उनके जो मोटिवेटर्स हैं, जो लोग काम करते हैं आगे, अगर उनको ये चीज समझ आ जाए, तो नेक्स्ट टाइम जब घर बनाने का जाएगा तो फिर वो ये को ग्रेट आर्किटेक्ट का डिजाइन किया हुआ घर लेके नहीं दे देगा, ये ले जी अब बना दिया आपको। In fact, this is what we're planning to do for this competition, incidentally. ये जो पंजाब हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग कंपटीशन हो रहा है, तो इनिशियली हम जो आपस में सोच रहे हैं, तो उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली जो उनका मकसद है कि जी ये साइट हमारे पास है, इसमें आपने इनकम ग्रुप्स के लिए हाउसिंग बनाना है, डिजाइन करना है, प्लानिंग करनी है वगैरह। एंड एज वी लुक्ड एट द बेसिक जो भी डेटा उन्होंने दिया, वी रियलाइज कि ये साइट अच्छी खासी साइट है, पर अभी वहां पे कल एग्रीकल्चर हो रहा है। तो द फर्स्ट रिएक्शन वाज कि साहब ग्रीन हाउसिंग, so the first thing you do is you don't do urbanization of this green land, or so affordable means livelihoods, so livelihood, और फिर ये कि again green and affordable is when you can walk to your place of work from your residence, so within walking distance so you plan everything accordingly. मसलन जो हम सोच रहे हैं अभी, तो हम तो ये कह रहे हैं, यही हम प्रेजेंट करेंगे कि जी इसको तो आप और फॉरेस्ट बना दें, या अगर जो भी ग्रीन एक्टिविटी करें पर ग्रीन करें, नो डेवलपमेंट।
Urbanization is one of the biggest destroyers of the environment and the economies. So, not 1 inch of urban expansion. फिर क्या करेंगे? पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर आप देखें कि आपकी एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स कहाँ पे हैं, उनकी लाइवलीहुड्स क्या हैं, और उसके बाद फॉर ईच सेटलमेंट कहीं पे डेंसिटी को बढ़ाना है, कहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड करना है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाटएवर, लाइवलीहुड्स. सो इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम सोच रहे हैं कि वी मेक अ प्रेजेंटेशन एंड लेट्स सी. मना कर देंगे मगर कम से कम एक एक डेमोन्स्ट्रेशन तो हो जाएगा ना कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. लाहौर बचाओ मूवमेंट में भी एक पूरा कोर्ट केस तो लड़ा ही था जब ये नहर को एक्सपैंड करने हाँ के हाँ, बाद. एक नहीं कई कोर्ट केसेस किए. इससे ज्यादा एक सिटीजन क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक है. और ये आज जो हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि और कुछ हुआ या ना हो, हमारी बेदारी हो गई. तो हमारी बेदारी इस डिजास्टर की हुई है. नहीं, और वो क्यों? हमें नजर आ रहा है वो क्यों कि हम कह रहे हैं कि जी दरख्त बचाओ, ना काटो. छाबड़ी वाला हमें रोक के कह रहा है क्यों हो गया था उन्हें? डेवलपमेंट नहीं चाहिए. तो डेवलपमेंट होगी तो मोटरें तो बढ़ेंगी ना, मोटर बढ़ेंगी तो कुछ दरख्त कटेंगे. तो तुमने तो अपनी सारी जिंदगी मोटरें चला ली, अब हमारी बारी आई है तो तुम मना कर रहे हो. तो इससे फिर ख्याल आया कि देयर समथिंग दैट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. तो वहां से ये लाहौर प्रोजेक्ट की बात चली कि फिर अर्बनाइजेशन होती क्या है, सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, डेवलपमेंट होती क्या है. और उधर से फिर जो आइडियाज वगैरह डेवलप हमने किए कंजर्वेशन सोसाइटी में, वही फिर इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज डिवीजन था, उनके लिए नेशनल अर्बन पॉलिसी बनाने में हमने बहुत बड़ा किरदार अदा किया. इसलिए कि वी हैड डन ऑल द रिसर्च, और सब इधर उधर की बातें कर रहे थे. वी कुड प्रेजेंट सॉलिड फैक्ट्स एंड आंसर्स. तो और फिर वही principle we were able to bring into the Lahore Master Plan. And again, because as a group, Conservation Society Lahore Project, we had already worked on these issues, तो हम ज़्यादा उसे मौसर तरीके से कन्विंस कर पाए बाकी लोगों को. And we managed to bring about it a very good plan. वो ये भी सीखा कि भाई कहाँ तक जा सकता है, ये होने नहीं देंगे. वहां पे पहुंचने के बाद जो ना होने का एलिमेंट है वो उनकी इग्नोरेंस है या एरोगेंस है? उनकी मजबूरी है. मजबूरी मजबूरी है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है. है. यू मीन द माफिया? हाँ, तो वो पैसे का क्या करेंगे? इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो कहाँ करें? ये तो बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी. दे कांट डू एनीथिंग एल्स. हमें एक नेक मलिक रियाज की जरूरत है. तो यही प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस का है. दे कांट से वो तो यही कहते देखें जी हमने ऑरेंज ट्रेन बना दी, अब हम उसको ब्लू ट्रेन बना के देंगे. ये उससे लोग मुतासिर होते हैं और कहते हैं वाह वाह, बड़ा बड़ा डेवलप कर गया लाहौर, बड़ा प्रोग्रेस होगी. वो डिसजॉइंटेड आइडिया ऑफ प्रोग्रेस है ना. बिल्कुल है. कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आपको फायदा हो रहा है बट आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्योरली फाइनेंशियल है. इट्स नॉट एनवायरमेंटल एट ऑल. No, it's worse than that. It's destructive. Precisely these things which are destroying our city, our country, our planet. ये भी तो सकते कि हम कलयुग में रह रहे हैं. It's supposed to ये है, happen और like क्या this. है, यही तो कलयुग है जी.
नहीं नहीं, they have actually a property 8 kilometers from सियालकोट city है, 208 एकड़. नहीं नहीं नहीं, this is the Punjab Housing Authority. So they have invited the competition and With the backing of the World Bank, IMF, you know, ये इस किस्म की चीज ये लोग करते हैं ना, बैक, मतलब गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग है, इंटरनेशनल एजेंसीज की. ठीक लग रहा है कि it's not about winning at all. Not about winning, just to get the message out. It's about since it's a public company, they can't deny an application. So you give your. हाँ, मतलब we just see it as an opportunity to bring this on to center stage. एक वो, but also I think जिस तरह हम बाकी opportunities की बात की, इसको बनाने में हमारी अपनी डेडलाइन होगी, सारा कुछ होगा, उसमें हमारी जो mobilization होगी, we will be ready for the other options as well. So I think it will be very valuable. हाँ हाँ, हर लिहाज से किसी को ना फायदा हो, हमें तो होगा. Exactly. और मतलब मेरा तो ये कमेंट लग रहा है जो आप कह रहे थे कि आप बात कर रहे थे कि अगर ब्रॉड प्रिंसिपल्स आर्टिकुलेट हो जाएं, हम लोग सब उनको कंसेंसस कह लें या समझ जाएं और उसको ओन कर लें, दैट्स अ गुड फिल्टर एंड सो देन यू कैन effectively use that anywhere for a greenfield project to go to any neighborhood. And I think one would have to have the humility कि जाहिर है वो रिवर्स तो नहीं कर सकते ना, बिल्डिंग है, but that doesn't matter. That doesn't matter. अगर एक सुहांजना का दरख्त भी लग जाए तो वो टेक ऑफ हो गया ना, उस प्रिंसिपल से अलाइन हो गया. तो and I'm sure there will be many small interventions. और वो ये कहते हैं कि इंटरवेंशन का बहाना होता है रिश्ते बढ़ाने का, तो जो बड़े उसका अपना मोमेंटम. नहीं, और मैं कहता हूँ कि देखें, इतनी डाई हार्ड कॉम जो है हमारे इकोनॉमिस्ट्स, और दे आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ दिस होल मॉडर्न पैराडाइम, प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इतने वो मंजे हुए इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड और एडमिनिस्ट्रेशन से बैक, just the few remarks that I made about research methodology, which is necessarily destructive, which is the modernist linear growth development. और ये कि alternative भी है, which is the normative approach. तो वो बहुत ही थोड़ी सी बात, मगर वो उनको वो जैसे रग, they touched a nerve and they understood कि ये कोई बात तो इसमें है. तो कहने से you would be surprised कैसे कैसी जगहों पे अगर आप बात करें 10 बंदों को नहीं समझ आएगी, एक बंदे को भी समझ आ जाए, तो you've achieved something. So where do we go from here? So I would say जो आपने कहा है कि so they're not an either or situation or mutually exclusive. कंपटीशन वाला है, वही एफर्ट जो है वो पीपीएफ में भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होंगे, एंड ईच विल बी फॉर अस आल्सो काइंड ऑफ जर्नी. जो आप इमर्जेंट कम्युनिटी की बात करें, वो हम भी तो एक कम्युनिटी है, तो वो खुद रास्ते निकलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे वो हमें नहीं पता, मगर अगर नियत है और एफर्ट है तो कुछ ना कुछ, एटलीस्ट वी शुड बी रेडी फॉर एन अपॉर्चुनिटी व्हेन इट माइट अराइव. क्योंकि ये भी तो होता है ना, कई दफा आ जाता है वी आर नॉट रेडी, द अल्टरनेटिव वर्ल्ड इज नॉट रेडी, सो दैट स्पेस ऑब्वियसली इज टेकन अप बाय, कभी तो पूरी थियरी है ना कि बैड मनी ऑलवेज रिप्लेसेस गुड मनी. बकायदा इकोनॉमिक्स को ग्रेशन लॉ कहते हैं, तो ना कि डिफिकल्ट मनी से जब काम हो रहा है, इजी मनी आ गया तो वो अच्छा वाला मनी जो है ना, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट कैन हैपन रिपीटेड टाइम्स टिल
irreversible process. I think आपने articulate किए हैं what can a way to go from here? ये सारे options are worth taking the next Explore, one. let's go EPF, further. let's go further. And I think WWF today I know they have a sort of sustainable cities and program globally, and वो भी principle based है, equity, energy use, इस तरह की चीजें हैं. So there'll be quite a lot of alignment. और उसी को एक किस्म की energy मिल सकती है. And I think, as you're saying, there's some societal dynamics are favorable in terms of, I think, more space opening up, partly because economic models are failing so miserably in so many places. But the Pakistan economically is in higher state, and yet our stock exchange is one of the best performing in this region. So बकायदा article है कि secure है और very simple. Those with money can play with it and make money. Completely coupled with created by economic sector. So sensitivity जो आप कह रहे हैं वो है. तो बजाय आइदर और के हाँ. इन सारी फ्रंट्स पे थोड़ा और करते हैं. Concept notes front पे बन जाए. Obviously each front requires a lot of effort. So take one at a time or be ready and some can. So I would suggest don't close any fronts. ये तो आप कह रहे हैं this scenario and options. Some are on the back burner, some play on the front foot, but they're there. तो फिलहाल फिर ये हाउसिंग कंपटीशन पे तो हम इंशाल्लाह करेंगे. उसमें अगर कोई हिस्सा लेना चाहे you can discuss what role you can offer कि हमारे ऑफिस में वो एनर्जी यूज मॉडलिंग ये वो करते हैं. We can assist in that perspective. दूसरा पॉवर्टी एलिविएशन वालों से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं. हाँ, उनको बढ़ा. और ये डॉक्टर नासिर जब जो है एक्स वो पॉवर्टी एलिविएशन नहीं वो सेपरेट है. पहले वो अर्बन यूनिट के हेड थे. हाँ. अब पता नहीं कुछ और डिपार्टमेंट में है. उनको भी कर लें क्योंकि वो अर्बन यूनिट अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट शायद सेक्रेटेरिएट उनके अंदर है और उनमें काफी लोग हैं. काफी मतलब कुछ एक्स-डब्ल्यू लोग भी हैं. उरूज हैं जो लाहौर कनाल वाइडनिंग केस में बहुत एक्टिव थी. हेड ऑफ द GIS. तो वहाँ भी काफी रिसेप्टिव ऑडियंस मिल जाएगी. तो उनके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? यही अर्बन यूनिट होते थे. उमर एक और साहब हैं. वही उमर मसूद, बट नॉट उमर मसूद. आई वर्क विद अनदर आबिद हुसैनी है. अच्छा. वो उनके एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के हेड. अच्छा. तो ही क्वाइट आई थिंक रिसेप्टिव टू ये डायलॉग से मेरे ख्याल से डेफिनेटली करना चाहिए. तो क्या ये भी कोशिश करें कि इन लोगों से जो बात करें तो फिर कोई एक यूनाइटेड फ्रंट जैसा फोरम को प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस who are concerned with the issues of urban futures. My immediate sense is कि अभी ना उनको इकट्ठा ना क्योंकि ये बहुत ऑफिशियल फंक्शनल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और इनोवेशन is not a natural partner for large organizations. So I think आपकी इनोवेशन ये वाला कर रहे हैं. ये conceptually जितनी स्ट्रेंथ है ना वो डाइल्यूट ना हो जाए. So I would say one at a time. Okay. And focus on the individuals that you find receptive. तो कई दफा ये भी होता है कि PPS वाले में एक इंडिविजुअल बहुत रिसेप्टिव होगा. When they take it to their organization, it's cut off very quickly by their own people. ठीक है हमारे मॉडल में फिट नहीं हुआ ये क्या होगा. तो वो अच्छे खासे सीनियर लोग हैं ना वो उनका अपना ही इदारा उनको उनके अपने डायनामिक्स. So I think individual level पे रखें तो what you're describing it sounds like a serious enough opportunity that
few individuals are offering to open up. We stay with those channels. तो उसमें जिम्मेदारी भी हैवी होती है ना, तो whoever is offering कि PPF को कर सकते हैं, तो point is we don't let go of them. उसमें आप ही ने करा के देना, जहाँ से concept और principles आ जाएं, but the channel of interaction let those key persons in our conduit, because it's that sensitivity that's the key. तो इस वक्त फिर WWF में हम कनाल वाइडनिंग में थे, तो हम अच्छे खासे लाए, but there was many opportunities, many instances where I would report to the board, and once the board said, Ali, हम withdraw from the case कि हम जीत नहीं सकते, भाई जीतना क्या तो है भी, मुझे फायर कर दें, अब तो नहीं मैं केस करता हूँ, तो but there were many supporters, so वो I think उसको उनकी जो स्पेस है ना, उसको वन रिकॉग्नाइज कि उनके लिए भी काफी टफ होगा। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने तो खुद वॉलंटियर किया, डोंट लेट देम तो प्लीज वही लीवरेज देके अनलॉक करें। सही है। तो ये गुफ्तगू बहरहाल जिस से भी शुरू हो सकती है, कर सकते हैं, करनी चाहिए, और फिर देखें जहाँ भी अपॉर्चुनिटी डेवलप करे अकॉर्डिंगली फिर आगे चलते हैं। तो एंड आई वुड से कांसेप्ट जो आप कंपटीशन का कह रहे हैं, दिस सीम्स लाइक वन ऑफ द फर्स्ट। इसी में आर्टिकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल अगर आ जाएंगे तो वो हम लोग भी, तो अगर हम नेक्स्ट सैटरडे उस वक्त तक जहाँ भी पहुंचे हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं, आई थिंक दैट विल, तो फिर आप भी कुछ हमें फीडबैक दे सकते हैं, यूं नहीं यूं कर लें, आपको पता चल जाएगा हम किधर जा रहे हैं, और उसमें अगर कोई गुंजाइश आप देखते हैं कि जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बाय ऑल मींस जॉइन अस। सो लेट्स फॉर द मोमेंट कीप इट लाइक दैट। बाकी जिन जिन इंडिविजुअल से बात चल रही है, ये पीपल, ये पॉवर्टी एलिविएशन वालों से भी गुफ्तगू जारी रखते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सैटरडे we will present whatever interim stage we've reached with the affordable housing project, which is a competition, और फिर उसके हवाले से फिर देखते हैं आगे। और ये आप लोग भी जो अपने कोई वाकिफ से इन आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। if anybody wants to participate in some way, so we should not close any doors for now.